हे गाइस, दिस इज पूर्व अग्रवाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है काउंटिंग सॉर्ट एंड सो लेट्स सी। So the time complexity of count sort is better than other sorting techniques like merge sort and quick sort, इसलिए हम इसको पढ़ रहे होंगे. So let's see what happens in count sort. So in count sort we'll be doing majorly two tasks. First is we'll find the count of every distinct element in the array. Our array may contain some duplicate elements, so we will be storing the count of every distinct element in the array, and secondly we'll find the position of every element in the array. So let us understand this with an example. First of all, what we'll be doing is we'll be storing the count of each distinct element. For that we'll take another array. So now question arises कि हमारे count array का size क्या होगा. So we have two options. Either we can create a max variable and allocate the array size, or else we can find the maximum element in our input array and allocate the size accordingly. जैसे यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 6, तो यहाँ मैंने काउंट एरे लिया है ऑफ साइज 7 सो दैट आई हैव इंडेक्स 6 इंक्लूडेड. सो इन द काउंट एरे आई हैव स्टोर्ड द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट विच इज नॉट अ बिग डील. जैसे द अकरेंस ऑफ 1 इज ट्वाइस इन द एरे, सो आई हैव स्टोर्ड 2 एट द इंडेक्स 1. सिमिलरली फॉर द एलिमेंट 2 it is occurring twice, so I have stored 2 at the second index. In the previous step we saw the count array. The count array represents the count of each element, but what we want is the position of every element in our array. So for that what we'll do is we will update the count array to store the count of the previous element plus the count of the current element. जैसे यहाँ पर अगर हम ले 4, तो 4 पर हमने स्टोर कर दिया 2 + 2, मतलब जो 1 का काउंट ऐड करके हमने 2 पे स्टोर कर दिया, तो इट बिकम्स 4. सिमिलरली वी एडेड 2 and 4, so 3, so at the index 3 we have 6. Similarly for the whole array, so this modified count array represents the position of each element. So now our final task is to construct the output array. So for that I have made another array of size of our original array. We will start by traversing our original array from the last index. So at the last index we have value 4. So we will look it up in our count array. At index 4 the value is 9. So what we'll do is we will decrement the value of 9 to 8 and store the value 4 at index 8 in our output array. Then we will move on to our next element, which is 2. So then again we'll follow the same procedure. We will look up 2 in our count array. So sorry, at the index 2 we have the value 4. So what we'll do is we will decrement 4 to 3 and store 2 at the third index in our output array. फिर हम अगले वाले एलिमेंट में चले गए, तो अगले वाले एलिमेंट की वैल्यू है 3, तो वही हम 3 को देखेंगे हमारे मॉडिफाइड काउंट एरे में. 3 पर वैल्यू है 6, तो 6 को हम इंक्रीमेंट कर देंगे टू 5 एंड वी विल स्टोर 3 एट द 5th इंडेक्स इन आवर आउटपुट एरे. दिस प्रोसेस वी विल रिपीट ऑन एवरी टाइम फॉर एवरी एलिमेंट. तो फॉर द एलिमेंट इज 4, फिर हम 4 पर देखेंगे. 4 पे वैल्यू 8 है, 4 पे वैल्यू 8 है, तो हम 8 को डिक्रीमेंट कर देंगे 7 एंड वी विल स्टोर 4 एट द 7th इंडेक्स. हमारे पास अगला एलिमेंट आता है 6. वी लुक अप 6 इन आवर modified count array. The value at the 6th index is 10. We will decrement 10 to 9 and we will store 6 at the 9th index. The next value is 1. So the value at the first index is 2. We'll decrement 2 to 1 and store 1 at the first index. Very simple. Then the next element is again 4. So at 4 we have value 7. So what we'll do is we'll decrement 7 to 6 and store 4 at the 6th index in our final output array.
last 3 elements are remaining, we'll do the same. The value is 2, so at the second index in our modified count array we have 3, we increment 3 to 2 and store 2 at the second index in our output array. The second last element we'll be looking up is 3, so the value at 3 is 5, so we'll decrement 5 to 4 and store 3 at the fourth index. The last element is 1, so the value at 1 is 1, we'll decrement 1 to 0 and store it at the 0th index. So now as you can see, we have the final output array, we have the final sorted array. ओके तो यहाँ पर हमारा इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म होता है। अब भाई हम तो है प्रोग्रामर, और भैया बिना प्रोग्रामिंग किए तो अब भाई आप तो खुजली मिटेगी नहीं, तो चलो अब इसका कोड भी देख ही लेते हैं। ओके सो हम कोड में वापस आ सके। सो आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन नेम्ड काउंट सॉर्ट with parameters int arr which is our input array and its size which is n. So firstly what have I done is I have created an integer variable k to store the maximum value in the input array, and we have found the maximum element. So now what we do is we will allocate our count array. So now a problem arises here that we cannot allocate the size of array in C++ dynamically. So for now we know that our size of the array is 10, so we'll take 10. So what have I done here is I have stored the count of every distinct element in the array. So वो बहुत सिंपल है, बस हमने 0 to n लूप किया एंड at the respective index we have incremented the count. So the next step will be finding the position of the element in the array. So for finding position we'll store the count of the previous element plus the count of the current element. For this we'll traverse the count array and do the operations. मतलब यहाँ पर अब इसमें है क्या कि हमने count array में loop किया from 1 to k, then count of arri is equal to count of I minus 1 plus count of arri, मतलब वही जो पहले देखा था. So the next step will be to find the output array, to build the output array. So now for finding the output array I will first allocate the output array of size of the our original array. तो हम अब output array build करने के लिए करेंगे क्या, we'll traverse the original array from the last index. So for I equal to n minus 1 till I is greater than equal to 0, I minus and then output of count of arr I minus is equal to arri. यहाँ पर I have used यहाँ पर मैंने प्री डिक्रीमेंट यूज़ किया है क्योंकि हमें पहले उसका काउंट डिक्रीमेंट करना है एंड देन वी हैव टू अपडेट द आउटपुट array. So last step is simply we'll update our input array, we'll copy the output array to the input array. फिर से we'll loop from I equal to 0 to I less than n and then I plus plus. Okay. So let's see. Okay, so हमारा कोड अब रेडी है. तो लेट्स सी, हमने वही आउटपुट लिया, हमने इनपुट वही लिया है जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल देखा था. सो नाउ इट शुड वर्क करेक्टली. Yes, we are getting the right output. तो गाइस आज के लिए इतना ही.
We'll meet next time.